पहले के ज़माने में जैसे कि हैंड पेंटिंग था, तो वहाँ की जर्नी से अभी डिजिटल पेंटिंग तक पहुँचे हैं ये. Because there's broad demand for hand painting pictures, and at one point I think I had like 30 or 40 back orders of big During pictures. those times. Yeah. तो ना हैंड पेंटिंग की हमेशा वैसे भी बहुत डिमांड रहती, तो एक समय पे अराउंड 30-40 पेंटिंग्स पेंड मतलब करने का था. So drama was such that, okay, those in 1998, these big inkjet printers were coming on the market for doing big pictures and posters straight from the computer. So we sort of went in that direction because there was broad demand, and of course, how much can you paint? क्योंकि 1998 में जब इंक जो मशीन्स जब आए बाहर, तो जो तब उस समय में जैसे डायरेक्ट कंप्यूटर से प्रिंट कर सकते, बिग स्केल में बड़ी पिक्चर्स प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि हाथ से पेंटिंग करने की एक लिमिट होती है ना, क्योंकि बहुत सारा होता है काम. So pictures now have gone from art department all around the world, digital pictures, and we have something like 2,300 different pictures. Okay. All of Yagya history and exhibition sets bought in all languages, also Kannadic. All the languages. Yeah, and many different languages the pictures now. So तो अभी तो आर्ट डिपार्टमेंट है वो बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत सारी वैरायटीज है, हर भाषा में आपको पिक्चर्स मिलते हैं, यज्ञ के, बाबा के, हर भाषा में. हाँ, 2300 पिक्चर्स बाहर है. No, the number I forgot to say the number. So, yeah, 2,500. Yeah, 2,500. So so that's been wonderful being able to be part of that seva. And also at the same time, music has been a gift from Baba, of using music, how to use sound to create silence, that sort of metaphor. तो डेविड भाई को वैसे तो बहुत सारी स्पेशलिटी, वो नहीं बता रहा, मैं बता रही हूँ, बट जैसे उनका जो पेंटिंग का जैसे बता रहे हैं कि एक स्पेशलिटी है, साथ साथ जैसे बाबा से गिफ्ट है म्यूज़िक की, तो कैसे साइलेंस, म्यूज़िक से साइलेंस में लेके जा सकते हैं वो. Actually interesting, the blessing today, the blessing on the aspect of silence and experiencing that master seed stage. When I took Gyan, this was one of the I guess the experiences I had when I lived in Australia in the outback. A lot of silence. जो आज का वरदान है बीज रूप स्थिति, तो जब उनके स्टार्टिंग के दिनों में जो अनुभव उनका जो मेन रहा है, जो बेसिस रहा है, ऑस्ट्रेलिया के एक बाहर के पोर्शन में ये रहते थे, तो वहाँ का जो उनका अनुभव है वो इस बीज रूप स्थिति के आधार पर था. And almost if we spend that time or have experience of that, of course, then what I've felt along the way, especially with artistic things, because almost you get the right touching of what to do, and the method of how to do that when we experience that stage in silence. क्योंकि जो आर्टिस्ट है जो पेंटिंग्स करते हैं, तो ये स्थिति है वो जैसे कि बहुत काम आती है, क्योंकि जब उस स्थिति में आप स्थित होते हैं तो जैसे बाबा की टचिंग्स आपको मिलती है, आइडियाज़ मिलते हैं उस पीस में. And then nothing becomes impossible. और फिर कुछ भी impossible नहीं होता, असंभव नहीं होता है. So this has been, because sometimes souls will say, oh, where did you learn all these things of the music and art and these things? And I think it's just like, there's interest in doing that for seva, but the method and way of you do that is in that process which just unfolds. कई बार लोग पूछते हैं कि आप ये कैसे करते हैं, कैसे सीखा है, पर ये जैसे कि जो मुझे समझ में आया कि उस स्थिति में ऑटोमेटिक आप नई नई चीज़ें जैसे कि सीखते हो और वो ऑटोमेटिक होता रहता है. I guess it's like the same thing when Baba says, if you take one step towards Baba, then he'll take 100 steps towards you. So I think initially we start something, and then how it happens that's the magic, Baba's magic. तो जैसे बाबा कहते हैं ना, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाबा 1000 कदम बढ़ाएंगे, तो ये भी कुछ ऐसा है कि आप जैसे एक स्टेप लेते तो आगे की जो जर्नी है या जो सेवा
उसमें कर रहे हो वो ऑटोमेटिक जैसे कि होता रहता है, मैजिक होता रहता है. Because it's usually that first, the first thought, isn't it? Usually that makes the biggest impact. If something comes to you and you think, oh, I can't do that, then you can't do it, no? Because already you've said in your mind, I can't do that. But if it's open, then something will come, some way of doing that someone will show up, or some situation will present that what you need to do that particular task. So that's तो कोई भी कार्य में या सेवा में जो पहला संकल्प होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. क्योंकि जब हम पहली बार कह देते हैं कि ये नहीं होगा मुझसे, या कोई ना कोई जैसे बहाने यूज़ करते हैं, तो जैसे कि नहीं होगा, पर जब वो कदम उठाते हैं हिम्मत का कि हाँ कि कर रही हूँ, तो कोई ना कोई वस्तु या व्यक्ति या कुछ ना कुछ निमित्त बन जाता है उस कार्य करवाने के लिए. who thinks they're an artist? Hands up, who thinks they're an artist? तो कौन सोचता है कि हम आर्टिस्ट हैं? And in Satyug, what are we doing? In Satyuga? सतयुग में हम क्या करेंगे? Art. So who thinks they're an artist? तो अब कौन सोचता है कि हम आर्टिस्ट हैं? So more hands. सब है ना वैसे तो? We're all artists, aren't we? सब आर्टिस्ट हैं हम ना. And I think sometimes, what makes something a piece of art, and this is not just painting, no. This can be cooking, this can be cleaning, this can be doing any action actually. क्योंकि जैसे हर कार्य जो हम कर रहे हैं वो जैसे कि पीस ऑफ आर्ट है, चाहे वो सफाई हो, कुकिंग हो, या कोई भी कार्य, वो भी एक आर्ट है. So when we're 100% focused on one task at one time, it becomes a piece of art. जब हमारा 100% अगर उस कार्य में है, तो जैसे कि वो कार्य एक आर्ट बन जाता है. Who feels that when they focus 100%? किसको लगता है कि जब हम 100% वो देते हैं तो हम आर्ट क्रिएट करते हैं? And usually what happens then is if we love doing that task, it's even more so, yeah? Because we're 100%, we love doing it, and we make it a piece of art in whatever way. It can be just somebody observing someone else that's doing something they love doing, and they're 100% in that, and you can see that the way that's being done, and the attention to detail and correctness of that becomes a piece of art. तो जैसे कि हम जब एक तरफ से 100% भी दे रहे हैं, और फिर उतनी ही अटेंशन से हर छोटी छोटी बातों में, और उसमें भी एक और एडिशन की कि अगर जो चीज़ कर रहे हैं उसमें अगर प्यार है, प्यार से उस भावना से करते हैं, तो जैसे कि वो जो देखने वाला है उसको भी वो फील होता है जैसे कि आर्ट है. Because in golden age, of course, we're all artists, and of course, whatever we're doing, we're 100% soul conscious, and we're 100% in that moment doing that particular task, because that's what makes it an art. Yeah. जब सब सतयुग में होंगे तो वैसे भी हम अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे और अपना 100% दे रहे होंगे, तो हर कार्य जैसे कि आर्ट है. So wonderful. So, okay. How I came into Gyan? Well, everyone's way of coming into Gyan is different. But actually, at the time I'd come into Gyan, I'd been living in the forest, out in a very outback place in Australia. Just to give you an example, in 1 year, that 1 year I spent in the outback, I saw 10 people in 1 year. तो ये जब बाबा के बच्चे जब ज्ञान में आते तो बहुत अलग अलग तरीके से बाबा के बच्चे बनते हैं, अलग अलग चीज़ों से. तो ये जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जब ज्ञान उठाया था, तो उस समय जहाँ पे रहते थे वो बहुत जैसे कि जंगल जैसा एरिया था, और जैसे वो कह रहे थे कि उनने एक साल में सिर्फ जैसे कि 10 लोगों को देखा था, इतना मतलब दूर जगह था. So I got an invitation to go on a boat trip, 2-day boat trip to this very special place in the Kimberley, which is the northwestern Australia, northwest. And
that invitation was just for 1 week. And when I went to this place, it was so beautiful, the fresh water coming out of the ground, spring water, big rock pools like natural swimming pools, and the whole area was like a little paradise. So when that boat returned after 1 week, I stayed for the next 1 year. तो उनको इनविटेशन आया था कि एक नॉर्थ की तरफ एक जगह है किम्बरली, तो वो वहाँ पे उनको इनविटेशन था कि वो वहाँ जाए। तो वो 1 हफ्ते का ही प्रोग्राम रहा था, तो वो गए तो सही, पर जब रिटर्न आए तो वो नहीं आए बोट में, वो 1 साल वहाँ पे ही रुके, क्योंकि वो स्थान इतना बहुत अच्छा है कि वहाँ पे नेचुरल स्प्रिंग वाटर्स थे ना, नेचर था, पूल्स थे, तो वो वहाँ पे ही रुक गए। So in that 1 year experience, I had many experiences of, actually I had experience of Shiv Baba, I had experience myself as Atma, and also I painted, the first picture I painted of a golden temple, and actually Brahma Baba appeared in the middle of that temple in that 1 year. And of course there was bored silence, no engine, no motor car, no traffic, no noise, no internet, no radio, just the nature. तो उस 1 साल के दौरान उनको बहुत सारे जैसे कि अनुभव हुए। तो उस दौरान उन्होंने शिव बाबा का पिक्चर है वो पेंट किया, गोल्डन टेम्पल भी जैसे कि पेंट किया, और उस पेंटिंग के दौरान बीच में जैसे कि ब्रह्मा बाबा भी दिखाए। Were you in ज्ञान that? No, No. this is two years उनको before. ज्ञान भी नहीं था, तब ये बाबा के पिक्चर्स या ब्रह्मा बाबा का वो सारा पेंट किया था उन्होंने, तो मतलब बाबा जैसे कि टचिंग कर रहा था। And that picture of Brahma Baba appeared when I painted the temple. You know, if you paint, say you have a white wall, and you paint it with one color, and you can still see behind the previous color. So it was like this, the picture of a person sitting in meditation, of course was sitting like Brahma Baba sits in this half lotus position. And of course I didn't know that was Brahma Baba, but after 2 years I took Gyan after that time, but when I saw Brahma Baba's picture, I realized that person in that temple was Brahma Baba. तो जब वो मंदिर जो टेंपल बना रहे थे पेंटिंग के अंदर, तो जैसे कि पेंटिंग आप करते हो तो जैसे कि स्ट्रोक दे रहे हो तो पीछे का जो ओरिजिनल कलर है वो अभी भी दिखता है। तो ऐसे ही जब वो कर रहे थे तो जैसे ब्रह्मा बाबा का उनको दिखाई दे रहा था, जैसे ब्रह्मा बाबा यूजुअली आदि लोटस सीट में जैसे बैठते हैं, तो वो उनको जैसे कि दिखाई दे रहा था। और उस समय उनको पता भी नहीं था कि ये कौन थे, पर जब 2 साल के बाद जब ज्ञान में आए तो पता चला कि ये वो थे। And that time was I built my own camera from the forest, out of trees. तो उस दौरान जंगल में उनने खुद के कमरा बनाया वहाँ पे। And because my Lokik work was carpenter and joiner, so I knew how to work with the timber and. क्योंकि उनकी जो लौकिक जो स्किल है, जो जॉब या जो स्किल्स है वो है कि फर्नीचर बनाना, कारपेंट्री का, तो उनको पता था कि कैसे बनाना है वो सब। But it was bored simple. I had one knife, a spoon, a bowl, one little wok, one little saucepan. That was my kitchen cooking, and open fire on with lakadi cooking. तो उस समय जैसे कि बहुत सिंपल था सब कुछ, जैसे थाली बर्तन सब कुछ एक था, स्टोव था वहाँ पे, बॉन फायर पे जैसे कि कुक करते हैं, तो बहुत ही सिंप्लिसिटी थी। But one of the powerful experiences was when this picture of Brahma Baba I painted, or not of Brahma Baba but the temple, the feeling that time was I felt truth was within silence. That was the first thing. I felt this, like, because this is dosal peligyan, yeah? Dosal peligyan? 2 साल के बाद, हाँ। And but the feeling was like in that situation all the basic needs were met. There was water from the spring. I'd built shelter, so they had shelter, water, some food I had, supplies I'd brought in the boat, and it became very simple. What did I need? You know, it was come back to just basic needs. And every time I'd have, especially cooking with the food, if I had even one mouthful more,
than what the body needed of food, I'd get a very clear touching or indication that was greed, or that was just for taste. It wasn't what I needed. And that was very powerful experience at that time. And this went on for some weeks. तो उस दौरान जब वो वहाँ पे रहते तो एक तो था सिंप्लिसिटी थी क्योंकि और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं थी, तो जैसे कि उस साइलेंस में उन्हें एक सत्यता की अनुभूति की कि वो हर चीज़ जब कर रहे थे, एग्जांपल दिया कि जैसे खाना भी सामने था तो जो बोट में लेके आए थे वो उतना ही था, तो उस समय जब वो खाना खा रहे थे तो जैसे ही ये संकल्प आ रहा था कि थोड़ा सा और खाना है, तो क्योंकि वो उस स्पेस में थे सत्यता की, सिंप्लिसिटी की, तो जैसे वो एक्स्ट्रा भी वो संकल्प आ रहा है ना तो पता चल रहा था कि ये जैसे कि ग्रीड है, तो वो एक सत्यता की स्थिति है. So this was it was a feeling also at the time that, okay, if I had just what I needed, also everything would be provided. That sort of feeling that whatever I needed would be provided as long as I had what I need, and I surrendered to this silence because I was feeling silence was something very special in this space of silence. तो जैसे कि उनको ये था कि जितना मुझे चाहिए आवश्यक है, अगर मैं उस स्थिति में अगर मैं रहता हूँ तो जो भी चीज़ मुझे चाहिए वो मेरे पास ऑटोमेटिक आएंगी. So after nearly, and then I had also experienced myself here as soul, one experience of the full moon and reflection of the rocks. It was like one of the rocks on the cliff were like glowing like a light, and I was staring at that rock, and I could see the full moon above my head through the trees, and it was like this light from the full moon and the light from this rock on the other side of the cliff, and I had this experience myself as Atma, as soul, being immortal, eternal, all these feelings of the immortal self. तो उसी दौरान उन्हें आत्मिक स्थिति की जैसे कि अनुभव हुआ, तो जैसे कि पूरा चंद्रमा जैसे है ऊपर और सामने जो एक पत्थर जो रॉक बड़ा सा था, तो जैसे कि वहाँ पे उस लाइट के भी प्रकाश पड़ रहा है और वो जो लाइट है वो वहाँ पे, तो जैसे कि आत्मा को जैसे कि देख पा रहे थे, वो अनुभूति कर पा रहे थे. So that the next day I climbed up to that cliff face where that rock was, and when I got to that rock, it was like a very flat surface, and it was about a 45-degree angle to where I was sitting on the other side of the cliff, so it was reflecting the moonlight. From the down or from when you went from up? From the moonlight here, okay, coming and reflecting this way to where I was sitting on the other side. So I painted that rock with a red dot and this blue circle around it, and that used to become my evening meditation. I used to sit and stare at this point. क्योंकि जब वो ऊपर वहाँ पे गए तो जैसे कि वो पत्थर था, वो जैसे कि 45 डिग्री के एंगल में ऐसे फ्लैट था, तो उन्हें उस पत्थर को जैसे कि एक बाबा के इमेज के रूप में जैसे कि वो पेंट कर दिया, तो वो उनके इवनिंग मेडिटेशन टाइम का जैसे सामने एक ऑब्जेक्ट रहा था. So this went on many experiences, and then after nearly exhale, I thought, this is good, but how to be amongst people and have this same stage? Because I was very much like sannyasi there. Long hair, long beard, even a chillam, even had the chillam, no kapra nehi. For exhale, no kapra. So no good for brothers, no need washing anything, no? Just in the spring. Like आई थिंक काफ़ी हद तक ट्रांसलेट हो चुका है. तो जैसे उस एक साल में जैसे कि क्योंकि वो जैसे साइलेंस की वो लोगों से दूर रहकर ये अनुभूति तो कर पा रहे थे, पर फिर उनको ये था कि मैं लोगों के बीच में जाके भी कि ये अपनी स्थिति को कैसे मेंटेन कर सकूं. So then this strong feeling to go back in the village, and then I come back in the village, and then I got some work, carpentry work on this beautiful property outside this small village of 4,000 people, and then I did for 1.5 years, I learnt this spray paint. I said to the government, I said, I'm not interested in work, because in Australia they give you social security. If you don't have Lockheed work, they give you paisa. It's a very good system, yeah. So I said to them very honestly, I said, I'm not interested in carpentry, I want to learn spray paint.
can I still get this benefit? And they said yes. So I said, thank you. So for 1.5 years, I just practice and experiment. Sorry. नहीं, that's okay, Yeah. that's okay. तो उस दौरान जब फिर वहाँ से वो फिर जैसे डिसाइड किया कि वापस जाऊँगा, तो जो जिस गांव में वो रहते थे तो वहाँ पे वो विलेज में गए और फिर वापस थोड़े समय तो कारपेंट्री का वो कार्य कर रहे थे, पर फिर उनको लगा कि मुझे स्प्रे पेंटिंग का सीखना है। तो जैसे बताया कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी भी जैसे गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं स्पेशली सिटीजन्स के लिए, कि जैसे कि अगर आपको कोई जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको एक्चुअली वो सबमिट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तो फिर रिटर्न में गवर्नमेंट आपको वो पैसे देते हैं सस्टेन करने के लिए, बेनिफिट्स के लिए। तो फिर उनने अप्लाई किया, वो अप्रूव हो गया, तो जैसे कि वो फिर वो स्प्रे पेंटिंग सीखने लगे और फिर पैसे भी आते रहे, तो और क्या चाहिए। And one of every picture I painted, I put this point of light, which I experience. And I made this one picture like this size, with the edge of the earth and this big star. Like, you know, sometimes you see these pictures of the earth and the sun coming from just on the edge, and it makes a big point of light. So it was like this type picture. And that won first prize for exhibition in that town. And also the BK who visited that village in this festival time, he saw that picture and he said to me, "Do you know what you're painting?" He said, "This is picture of Atma, Paramatma, Parampita." And I started sharing my experience to him, and then he started sharing Gyan, and the rest is history. तो जैसे बताया कि जब उस दौरान जब वो सारे जो पिक्चर्स पेंट कर रहे थे, अगेन तभी तक तो ज्ञान नहीं था, तो हर पिक्चर में जैसे कि शिव बाबा का, जैसे उनको तब तो ज्ञान नहीं था पर बीच में डॉट करते थे। और फिर उसी दौरान एक जो एग्जीबिशन हुआ था तो एक पिक्चर्स उन्होंने दिया था, विलेज में किया था। तो अगेन वो पिक्चर जैसे आजकल हम देखते हैं काफ़ी, आपने वर्ल्ड सकाश के रूप में जब देखते हैं जो पिक्चर जैसे कि अर्थ दिखाते हैं और ऊपर से जैसे किरणें जैसे आ रही है, तो वैसा वाला पिक्चर किया था। तो वहाँ पे जो एक बीकी आया था, तो उनने ये पिक्चर देखा और फिर इनको पूछा कि आपको पता है कि आप क्या ये पेंटिंग कर रहे हो। फिर उन्होंने बताया कि ये आत्मा परमात्मा का मतलब, और फिर Thank you. और फिर जो है तो जैसे कि बाबा ने पहले से ही अनुभव दिए हैं ब्रह्मा बाबा के, शिव बाबा का, वो सारा। Yeah, a little bit? Okay, we can do, yeah. Okay. Thank you. तो अभी डेविड भाई हमारे लिए अगेन ना, हमारा बहुत भाग्य है कि लाइव मेडिटेशन सुन पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग एक्चुअली बहुत बुलाते हैं हर स्थान से। तो आज अभी हम मेडिटेशन करेंगे लाइव म्यूज़िक के साथ। तो वो जब तक रेडी कर रहे हैं, तो जो स्पेशलिटी डेविड भाई की है ना, तो जैसे कह सकते हैं जो ऑब्ज़र्व किया है कि वो बहुत ही इवन ज्ञान स्वर में है या कभी भी देखा हुआ है, तो जैसे कि अपनी एक नेचुरल स्टेट में रहते हैं, जैसे कि हर समय बाबा के साथ किसी न किसी रूप से कनेक्टेड रहते हैं। और वो इवन जब प्ले कर रहे हैं तो भी जैसे कि वो पूरे उस स्टेट में रहते हैं, तो जैसे वो म्यूज़िक भी बजा रहे हैं और क्योंकि वो उस स्थिति में है ना, तो जैसे कि हम भी बाबा के साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही हम्बल आत्मा है।